A program is a set of instructions that tells the computer to perform a specific task. A programming language is the language used to create programs. In this course, we will be using Python to give instructions to the computer. This means I can make my computer do anything? Yeah, true to its limits. Everything involves giving instructions. For e.g., when you click on the play button on a media player and the music starts playing, there is a program working behind the scene which tells the computer to turn on the music when the play button is clicked. Which of these you think might have involved the use of programming? So answer is sending gravity rows to Mars, automatic location detection by your phone, स्केलेटर्स, जार्विस. सारे जो 4 ऑप्शन है वो सारे आंसर है. सो यहाँ पर हम अभी चेक रिजल्ट करते हैं. ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर आया. देन यहाँ पर अभी नेक्स्ट. In no mood to break traditions and rituals followed through the years. Let's start with a Hello World program, usually the first program learned when studying a language. We want to display Hello World on the output screen. But, how? Let's see. To tell the computer to write on the screen, we use the print statement. It is a built-in function in Python to display things on the screen. A built-in function is a function which is predefined and can be used directly. Exactly like the batter which your mom uses to prepare pancakes. Whatever we want to display needs to be written inside brackets and enclosed within double quotes. So, to display Hello World, सो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी गई है और उसका आउटपुट भी यहाँ पर हमें Yippee! शो हुआ है. You just wrote your first Python program. सो ये था हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम. एंड यहाँ पर क्विज है. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन इट नीड्स टू बी राइटन इनसाइड ब्रैकेट्स एंड enclosed within double quotes. Select the right option. So यहाँ पर true. Okay, answer is right. Comments are pieces of code which are ignored by the Python interpreter. Comments are written to make source code easier to understand by other people. Python supports single-line comments, meaning that they can cover only one line. Anything written following hash is considered a single-line comment in Python. सो पाइथन में कमेंट कैसे लिखते हैं. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट हम लिखेंगे हैश. हैश जो साइन है हैश लिखेंगे वो. देन उसके बाद जो भी हम लाइन लिखेंगे वो होगी कमेंट लाइन. ओके, सो यहाँ पर क्विज है. हम क्वेश्चन रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट कमेंट्स इन पाइथन. सो पाइथन में कमेंट लिखने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम रिज़ल्ट चेक करेंगे अभी. सो ये करेक्ट आंसर है. ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन स्क्रीन इन पाइथन. सो पाइथन में हम टेक्स्ट को मतलब डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर हम प्रिंट यूज़ करते हैं. ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड डिस्क्राइब्स अ प्रोग्राम. सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर का. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, ये हम अभी यहाँ पर चेक करते हैं. सो ये करेक्ट आंसर है. देन यहाँ पर नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. सो यहाँ पर करेक्ट वे जो बताया गया है सो यहाँ पर प्रिंट करने का करेक्ट वे बताया गया है
मतलब हेलो वर्ल्ड जो है ये प्रिंट हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 4th नंबर का, इसको हम अभी क्लिक करते हैं। सो ये करेक्ट आंसर है। ओके, We learned a program is a set of instructions. Print function can be used to write in the output screen. The text to be printed has to be enclosed in quotes. Print is a built-in function. Hash is used to write comments in Python.